एक्चुअली ये थोड़ा कट हो गया। Okay, so let me continue. मेरी आवाज आ रही है? Should I start? एक्चुअली इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी अभी, पता नहीं क्या हुआ था, ये कट गया था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, तो मैं इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने थोड़ा तुम्हें बताया था इससे पहले, थोड़ा इंट्यूटिवली वर्ड्स जियोडेसिक between 2 points on a surface. So हम अब इसको प्रॉपरली मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। सो ए जियोडेसिक डेफिनेशन जो इसकी होगी, let me write a curve alpha on a surface S is called a geodesic. जियोडेसिक है, तुम अक्सर लिखते हो जियोडिस्क एग्जाम। इफ या तो अल्फा डबल डॉट यानी इसका जो सेकंड डेरिवेटिव या t is equal to 0 or is perpendicular to the surface. At the point alpha t, अगर हर पॉइंट पे ये सिचुएशन है तो उसको हम कहेंगे जियोडेसिक। दैट इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब है पैरेलल टू द यूनिट नॉर्मल। कहाँ इसको क्या हो गया? That is parallel to the unit surface normal for all values of t. ओके, अगर ऐसा होता है या तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है, यानी या तो वो स्ट्रेट है। दैट्स नॉट इंटरेस्टिंग उतना। लेकिन अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो कम से कम ये है कि इट इज पैरेलल, उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज पैरेलल टू द सरफेस नॉर्मल एट ईच पॉइंट ऑन द कर्व। अगर वो है यानी एक तरह से अल्फा डबल डॉट टी, पैरेलल के लिए डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा जो पैरेलल है तो वो जीरो होगा एक तरह से। तो अगर हमारे पास कोई कर्व ऐसी है इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो हमेशा पॉइंट करता है टू द सरफेस नॉर्मल, सो दैट वुड बी आवर, जैसे मैं अभी कर रहा था, क्या बोलते हैं, तो ग्रेट सर्कल की खास बात क्या है, उस कर्व पे जो एक्सेलरेशन है, राइट, एंड एक्सेलरेशन जो है that would be pointing towards the center, or surface normal b would be pointing towards the center. Of course minus n या n पैरेलल का मतलब नहीं है, मतलब अगर मैं n ये लेता हूँ आउटसाइड, मतलब pointing to the outside of the surface, तो पैरेलल का मतलब ये भी है कि it is in exactly the opposite direction. Okay, okay, now if now so let me write like this. Now let alpha at t, since it lies on a surface, let us call it r at u of t, v at t, be a unit speed curve
I can, if it's regular, I can always change it to unit speed via change of parameters from unit 1 में किया है. On the surface, R is equal to R at UV. Hence, unit speed का मतलब है alpha dot is a unit vector. And is by definition tangent vector of alpha. Hence, alpha dot is because it's a tangent vector, it lies in the tangent plane. So it's a tangent vector यहाँ पे है इस curve को. It would lie inside the tangent plane. So therefore it would be perpendicular to the surface normal. Hence alpha dot is perpendicular. We are evaluating the point T to N. Hence alpha dot comma N comma and अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूं N cross alpha dot, they are mutually perpendicular unit vectors. ये भी unit vector, ये भी unit vector. Of course, cross product of two unit vectors is which are mutually perpendicular is again a unit vector. R3 mutually perpendicular. जब मैं इस तरह से वहां पे उनको देख सकता हूँ. For a curve, unit vector. Again, since it is a unit vector, alpha double dot is perpendicular to alpha dot because it is a unit vector, and hence alpha double dot if it is perpendicular to alpha dot and these are three mutually perpendicular unit vectors, then alpha double dot must lie in the plane generated by n and n cross alpha dot. Therefore, alpha double dot is a linear combination. तो इस तरह से हम अभी तुम देखोगे हम क्या करेंगे. Linear combination of n and n cross alpha dot. So that is alpha double dot can be written as some, let me call some number kn times n plus some k sub g n cross alpha dot. अभी जानबूझकर मैंने kn लिया क्योंकि अगर मैं इसका alpha double dot right cross dot product with n लूं. Now, n cross alpha dot is perpendicular to both n as well as alpha dot. So, in particular to n. So, इसके साथ n product 0 हो जाएगा. The dot product इसके साथ 1. So, that would give me something like this is equal to kn. और अगर तुम्हें याद हो, I can think of it as r double dot. Because alpha double dot, these are points on the surface, right? It's a curve on the surface. These are set of points on the surface. So I'm on a surface. So Kn is the symbol for normal curvature, which is r double dot n for any point on the surface, in particular for these points. So चूंकि Kn symbol है, इसलिए हमने यहाँ लिखा Kn. Kn इसके बराबर होगा. और ये जो बचा हुआ है, that is Kg, इसको हम बोलते हैं, इसको बेसिकली हम बोलते हैं
geodesic curvature. Kn is called the normal curvature. ये जो नंबर यहाँ पे आएगा हमें इसका अगर हमें इसके बारे में ना भी पता हो तो let's call it Kn is the normal curvature and Kg is called the geodesic curvature. उसकी एक वजह है इसको geodesic curvature हम क्यों कहें of alpha. Okay, now clearly now Kn जो है वो होगा alpha dot n and Kg is equal to alpha double dot n cross alpha dot. So this would be the value, and of course अगर तुम इसका मॉडुलस वगैरह निकालोगे तो you will get clearly alpha double dot का square is equal to Kn square plus Kg square. Now since it is unit speed, तो unit speed में अगर हम double derivative ले, if K is the curvature of alpha, क्योंकि मैंने unit speed curve ली है, तो I must have K square equal to Kn square plus Kg square. तो मैंने basically break up किया इसका, है ना, curvature of a curve को into two parts. I can divide it into two numbers by this using this particular basis. So I get this is equal to this. लेकिन important ये है कि okay, moreover चलो मैं last पे उस पे आता हूँ. Moreover, if n is the principal normal of the curve alpha of alpha, we know that then alpha double dot is k times this small n, and we have हमें मिलेगा क्या मिलेगा k sub n is equal to this kn dot n, which is equal to k, I can write it as k cos psi, where psi, because they are both unit vectors, this is the principal normal and this is the surface normal, is the angle between this principal normal of the curve and surface normal, and this curve lies on the surface. तो अगर मैं ये एंगल इसको ये मानता हूँ, then it's obvious that, so अगर मैं यूज करूँ, अब सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे इस फॉर्मूला में, सब्स्टिट्यूट करूँ इसको kn is equal to k cos phi, then of course kg जो होगा वो होगा plus minus k sin psi. We can write these in terms of k, the curvature of उसके components है basically along two different directions, kn and kg. Now so okay, मैं पहले I don't want to miss this opportunity. अब देखो अगर ये होती जियोडेसिक, तो अगर ये जियोडेसिक है तो क्या होगा, तो हमें पता है ये जो अल्फा डबल डॉट है it is parallel to n, it lies along n, so therefore it is perpendicular to n cross alpha dot, right? Because this is perpendicular to n as well as alpha dot. So in particular it is but n is parallel to this, therefore it must be perpendicular to alpha dot. So that means alpha double dot n cross alpha dot is equal to 0. यानी अगर कर्व जियोडेसिक है उसका पूरे का मतलब that means this must be 0, kg must be 0. तो उसका जो
जियोडेसिक कर्वेचर है वो जीरो होगा, दैट मीन्स उसका पूरे का पूरा जो कर्वेचर का कंपोनेंट होगा दैट वुड बी अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, because this is basically projection of the curvature vector along the principal normal, यानी सारे का सारा curvature would be along the normal direction, तो कर्व जो होगी वो होगी जियोडेसिक। तो ये मैं यहाँ मिस नहीं करना चाहता, हालांकि मैं अलग यही कहने वाला, एंड देन ऑफ कोर्स जो अपना साई जो है वो जीरो होगा, और ये के एन would be equal to k and kg would be equal to 0. Now, if alpha is a normal section, लेकिन इसमें एक और बात भी है, if alpha is a normal section of the curve, a normal section of the surface, sorry, then alpha is the intersection of the surface with the plane, let's call it pi, containing n, containing the surface normal n, that is perpendicular to the tangent plane at surface, at any point on the surface. अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, आई होप यू कैरी मी, मतलब यू क्या बोलते हैं, बेयर विद मी, सिंस अल्फा जो है वो लाइज इन पाई, अगर ये नॉर्मल सेक्शन है ये उस प्लेन में लाई करेगी जो, एंड ऑफ कोर्स दिस प्रिंसिपल नॉर्मल also lies in pi क्योंकि ये प्लेन कर्व है, so it is also parallel to this pi, and pi is perpendicular to, pi is मैं क्या कर रहा हूँ, and since pi is perpendicular to the tangent plane, right, because it lies along n, and n ठीक है, because it contains the surface normal, so it must be perpendicular to the tangent plane, because n is perpendicular to the tangent plane. So therefore n is also मैं कैसे लिखूं, n is also parallel to pi, and since n and n, since n and n must be parallel to each other, why? Because they're parallel to pi, right? They're both parallel to pi, so therefore they must be parallel to each other. So उनके दरमियान जो एंगल होगा, therefore psi must be equal to 0, or which means that kn must be equal to plus minus k, and kg must be equal to 0 for a normal section. इससे पता क्या आया, तो मैं पहले ही कहता हूँ अगर kg 0 है तो it must be a, क्या बोलते हैं, a geodesic. So every normal section, hence every normal section is a geodesic. जो नॉर्मल सेक्शन वाली कर्व्स हैं वो जियोडेसिक्स होते हैं सरफेस पे, लेकिन खाली वही नहीं होती, और भी हो सकती हैं, वी जस्ट हैव अ क्राइटेरिया फॉर दैट कि हर पॉइंट पे उसका जो जियोडेसिक कर्वेचर है वो जीरो हो। तो ये क्या खुल गया, ओके, सो दैट वाज वन पार्ट। अब दूसरी बात ये है कि अगर कर्व जियोडेसिक है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, तो आई थिंक यहाँ पे मुझे शायद लिखना चाहिए, चलो कोई बात नहीं,
चलो, मतलब तुम समझ गए, बेसिकली ये डेफिनेशन है कुछ कि यहाँ से हमें ये मिलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाय द डेफिनेशन दैट द नॉर्मल सेक्शंस फॉर्म ए जियोडेसिक। मुझे लगता है आज हम इतना करते हैं, बाकी कल करेंगे। लेट्स एंड इट हियर।